Namaste and happy Dasai to you all. Dasai is a festival which is celebrated by Hindus over a period of 10 days to mark the victory of good over evil. According to Hindu mythology, Dasai is celebrated because goddess Durga slayed the demon Mahishasur who was creating a havoc in the world. During this festival, the 9 avatars of goddess Durga are worshipped for 9 days, while the goddess herself is worshipped in the primary form on the 10th day. Although the festival is celebrated differently in a different region, the most common practice is of Kanya Puja or Kanjak, where young girls are worshipped as vessels of each form of goddess herself. Such tradition not only celebrate the feminine but also worship it for the vigor. The real world situation paint a different picture. This is a story of suppression. This belongs to society and family alike. Meet the woman inside your house and the one right next to you. This is about her. I'll read you a tale in the back of the mind of every girl alive. A girl's body is in her own sometimes. The crux of this turbulence is a travail yet suppressed. It's about menstruation. ध्रुव कुमारी पांडे 49 वर्ष। मेरा नाम उषा है। उम्र आपकी? मेरी उम्र 35 वर्ष। बबिता नेउपानी कार्की। एज मेरो 47। मेरे शुभ नाम रश्मि घिमिरे। Hello. What's your name? I am Vaibhavi and I am 24 years old. Where are you from? I am currently residing in Meerut. Hello. What's your name? Meenakshi Kumar. What's your age? 50. अब अहिले भनेको नवरात्रिको सिजन। बिहान उठ्ने, नुहाइधुवाइ गर्ने, नवदुर्गाको पूजा गर्ने, देवी देवताहरूको पूजा गर्ने, यही हो। यसपछि अब सधैँको गृह कार्य नै हुन्छ। नवरात्रि पे हम व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। बहुत अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, मंदिर जाते हैं। चाडबाडको समयमा चाहिँ हामी घर सर सफाइ गर्छौँ हैन। अनि त्यस्तै अब खानेकुराहरू परिकारहरू चाहिँ अब अरू बेलाको भन्दा अलिक विशेष किसिमको बनाएर खान्छौँ। अनि देवी देवताहरूको चाहिँ पूजाआजा राम्रोसँग गर्छौँ। चाडपर्व अब विभिन्न किसिमका नेपालमा चाडपर्वहरू हुन्छन्। त्यही अनुसारले अब अहिले तत्काल विजयदशमी छ। विजयदशमीकै कुरा लिँदाखेरि अब पहिलो सुरु घर त हामी सधैँ सफा गर्दै रहन्छौँ। त्यो पनि विशेष गरेर यो नवरात्रिमा अझै माँ दुर्गा भवानीको पूजा आराधनाहरू गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा घरहरू सरसफाइ गर्ने, नित्य बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने, अनि त्यो नुहाइधुवाइ गरेर शुद्ध पवित्र वस्त्रहरू लगाएर अनि त्यस पछाडिबाट हामी चाहिँ पूजा आराधना गर्छौँ। अब कसैले घरमा जमरा थाप्नुहुन्छ, कसैले थाप्नुहुन्न, अब कसैले मन्दिरमा राख्न दिनुहुन्छ। अब जस्तै मेरै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ माँ दुर्गा भवानीको पूजा आराधनाहरू गर्ने गरेको छु। त्यसरी पूजा गर्छौँ, जमरा थाप्छौँ। 9 दिनसम्म बाहुन बोलाएर सप्ताह गर्ने पाठ गराउने, दुर्गा सप्तशती अनि चण्डीको पाठ गराएर माँ दुर्गा भवानीलाई आराधना गरिन्छ। त्यसरी पूजा आराधना गर्ने चलन छ। Nothing grand, the usual. We fast, we worship Durga, and I think during either Ashtami or Navami, we also perform Kanjake. हम लोग इसमें वैसे मैं तो फास्ट नहीं रखती हूँ, बहुत लोग फास्ट रखते हैं और 9 दिन फास्ट किया जाता है। कई लोग अष्टमी या कई लोग नवमी में कन्या भी पूजते हैं। 9 कन्याएं बिठाई जाती हैं और एक लड़का बिठाया जाता है जिसको भैरव बोलते हैं। इस पर खाली शुद्ध शाकाहारी भोजन ही किया जाता है। साफ़ सफाई में रहते हैं, अच्छे से साफ़ कपड़े पहनते हैं, पूजा वूजा करते हैं। और दुर्गा पंडाल है, वहाँ जाते हैं हम लोग। लेकिन आजकल कोविड के चलते अभी गवर्नमेंट ने ये सब बंद किया हुआ है, तो इस बार घर पे ही हैं। बेलामा भनेको अब त्यतिकै बस्ने,
घरमा कोही हुनुहुन्छ गरिदिने मान्छे भने अब नवरात्रिको अब अघिपछि पनि गर्ने जस्तै नि यति पूजाहरू गरिदिनुहुन्छ। हामी चाहिँ अब पर भएरै नुहाइधुवाइ गरेर चोखो गरेर बस्ने। नहीं, नॉर्मल तो नहीं रहता, क्योंकि जब पीरियड से होते हैं तो हम पूजा पाठ नहीं करते, नहीं हम मंदिर जाते हैं, तो मतलब ये होता है। अच्छा, बस यही है आप जो अलग करते हो उसमें? हाँ, ये अलग। हाँ, बाकी पूरा दिन हम नॉर्मली रहते हैं, मतलब जो हम रोज करते हैं वो सब करते हैं। अच्छा। महिनावारीको समयमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो सरसफाइ गर्नुपर्छ, आफ्नो शरीरको त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो चाहिँ पुरानो विचारधारामा चाहिँ पहिल्यैदेखि हामीलाई पुरानो हजुरआमाहरूले चाहिँ के सिकाउनु भएको छ भने हाम्रो चलनअनुसार पूजा कोठामा जानु नहुने, अनि किचनमा जानु नहुने, अरू कोठाहरूमा चाहिँ यताउति छुन हुने, छुनी र नछुनी सामानहरू हुन्छ मिस भएको बेलामा चाहिँ त्यो प्रथा चाहिँ कायमै राखिरहेका छौँ अहिलेसम्म हामीले। महिनावारीको समयमा अब म चाहिँ अलिकति अब मोडर्न भन्नाले त्यस्तो धेरै मोडर्न पनि परिन र अब चाहिँ पुरानो ख्यालातको भन्दा पुरानो ख्यालातको पनि होइन। तर यो महिनावारीमा चाहिँ अब सोच्दा अब मलाई जसरी मेरा बाबुआमाले आमाहरूले विशेष सम्झाउनु भएको थियो, बुझाउनु भएको थियो कि महिनावारी हुँदा 4 दिनसम्म अलग्गै बस्ने, छुवाछुत नगर्ने, चाहिँ भिन्दै बसेर भिन्दै बिस्तारामा एक ठाउँमा बसेर अलग्ग खाने भनेर त्यसरी गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने महिनावारी हुँदा हाम्रो चाहिँ अब अलिकति चाहिँ पाठेघर कमजोर हुन्छ, हामी महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति पीडा हुन्छ, त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ रेस्टको समय दिएको हो भने जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले मेरा छोरीहरूलाई पनि त्यही महिनावारी हुँदा 4 दिनसम्म चाहिँ पूजापाठहरू केही गर्न नलाउने, किचनको काम केही गर्न नलाउने, कपडा सपडा पनि केही नमिलाउने, उनीहरूकै आफ्नो बिस्तारामा बस्छन्, सुत्छन्, अनि खाना टक्क तयार भएपछि दिने, बोलाउने, खान दिने, त्यसरी ल है अलि अलग्गै बस भन्ने, रेस्ट गर्न दिने हो, त्यस्तो गर्ने गरेको छु बा। The regular, I guess, what do you mean by that? Is there any deviation from what you do in your normal life when you are on your period? Other than enduring enormous amounts of pain, nothing much. ऐसा तो कुछ नहीं था मेरी फैमिली में, मेरी मम्मी के साइड में कोई बंदिश वगैरह नहीं थी इस पे कि पीरियड्स के टाइम पे ऐसे नहीं करना। लेकिन मेरी नानी, दादी और जो मौसी वगैरह थी वो लोग थोड़ा ये सब बोलती थी कि पीरियड्स के टाइम पे अचार को नहीं छूना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, और इवन कई लोग ये भी कहा देते कि बाल नहीं धोते हैं उन दिनों, ये तक कहा जाता था। लेकिन मेरी मम्मी ने हमें इस तरह से नहीं हमको बड़ा किया इस तरह कि आप पूजा मत कीजिए या बाल मत धोइए। वो उन्होंने हमें नॉर्मली हमारे साथ ट्रीट किया और हम भी नॉर्मली रहे, और मैं भी अपनी ऐसे ही करती हूँ। त्यो चाहिँ भनेको अब हामी घटस्थापनाको दिनमा नवदुर्गालाई दियो कलश गणेश गरेर थापना गर्ने, नवदुर्गालाई थापना गर्ने र 9 दिनसम्म उपासना गर्ने, व्रत बस्ने। त्यसपछि 9औं दिनको दिनमा आएर 9 जना कन्या केटीहरूलाई ल्याएर उहाँहरूलाई किनभने देवी स्वरूप मानेको भएर 9 वटा केटीहरूलाई पूजा गरेर उहाँहरूलाई केही प्रसाद दक्षिणा दिएर अनि यसरी नै विसर्जन हुन्छ। कंजकों में हम कंजके बुलाते हैं, मतलब कन्याएं बुलाते हैं, उनके अच्छे से पूजा करते हैं, खूब अच्छे से, जैसे हम माता रानी की पूजा करते हैं उसी तरीके से हम उन कंजकों की भी करते हैं। दसैँको नवमीको दिनमा चाहिँ कसैको चाहिँ काटमार पनि गर्छन् खसी बोकाहरू। कसैले चाहिँ नवदुर्गाको पूजा गरेर त्यस्तै पूजाआजा गरेर मन्दिर गएर त्यसै गरी मनाउने चलन छ। दसैँको नवरात्रि त माँ भवानीको कृपा, दुर्गा माताको कृपाले मैले चाहिँ आफूले सकेसम्म अब यो नवरात्रि, सप्तमी, अष्टमी, आज त सप्तमी फुलपाती हो, अष्टमी, नवमीको दिन 9 वटा कन्यालाई बोलाइन्छ, अनि त्यस पछाडिबाट ती कन्याहरूलाई भोजन गराउने, आफ्नो मिठाईहरू चाहिँ खिरहरू खुवाउने, मिठाई पुरी खुवाउने, केक खुवाउँछन्,
सक्दाखेरि वस्त्र अलङ्कारहरू पनि दिने। Usually we gather young girls and mostly one boy. All of them are usually pre-pubescent and we distribute prasad amongst them. Okay. नवमी में हम कन्याओं को बुलाते हैं। छोटी कन्याएं होती हैं जो 3 साल से लेके 10-11 साल तक उन एज की लड़कियों को बुलाते हैं और उसी एज में एक लड़के को बुला के उनको पूजा की जाती है और उनको जो प्रसाद वगैरह होता है वो बांटते हैं। हाँ, कहते हैं कि शुरू से मैंने भी यही देखा है कि जब लड़की को पीरियड्स हो जाते हैं तो कहते हैं वो बड़ी हो गई है, तो उसके बाद उसको पूजा नहीं जाता है। यो बालिकाहरूलाई भने चाहिँ जुन बालिकाहरू महिनावारी हुँदैनन् र उहाँहरूलाई विशेष गरेर 9 वर्षसम्मलाई भनिन्छ। उमेर बालबालिका राख्नुको कारण चाहिँ उहाँहरू महिनावारी नहुन्जेल महिनावारी भए चाहिँ उहाँहरूलाई महिलाको रूपमा मानिने भएर अनि 9 वर्षसम्मको राखेको। एज तो 3 साल से 10 साल तक की। अच्छा। तो बस 3 से 10 तक की। अच्छा। क्योंकि फिर उसके बाद ना पीरियड्स हो जाते हैं तो इस वजह से हम उससे ऊपर नहीं बिठाते। अच्छा। और लड़कों के लिए भी कोई उम्र की लिमिट होती है? हाँ, लड़के भी इसी उम्र के होने चाहिए। हाँ जी, 3 से 10। वो पीरियड्स की वजह से होती है क्योंकि पीरियड्स हो जाते हैं तो वो कन्याएं नहीं रहती हैं। तो वो मतलब ऐसा बड़े बुजुर्ग बोलते हैं तो इस वजह से नहीं बिठाते उनको। मैले राख्दाखेरि पूजामा चाहिँ अब भन्नु पर्दाखेरि नानीलाई कस्तो भन्यो नि बाबा, यो अब 4 वर्षदेखि अब अलिक बुद्धि पलाका हुन्छन्, अब बोल्न जान्ने भन्ने हुन्छन् नि। 4-5 वर्षदेखि केटाकेटीलाई महिनावारी नभएसम्म, अहिले त अब 10 वर्ष 11 वर्षमा पनि हुन्छ, महिनावारी नभएकासम्मले जस्तै 11-12 वर्षमा पनि महिनावारी भएका छैनन् भने त्यस्तालाई राख्न सकिन्छ। तर अब वर्षक 4 वर्षदेखि 9 वर्षभित्रका केटीहरू भयो भने चाहिँ अति नै उत्तम मानिन्छ। अब नव दुर्गाको पूजा गर्दा चाहिँ केटाहरूले नै गर्ने हो। त्यो बलि दिँदाखेरि चाहिँ केटीहरूले हेर्नु हुँदैन हैन। अनि केटाहरू उमेर चाहिँ तोकेको हुँदैन। अनि पुरुष बालकलाई पूजामा राखिन्छ कि? पुरुष बालकलाई चाहिँ राखिँदैन, किनभने यो नवरात्रि भनेको देवीहरूको भएको भएर पुरुषलाई राखिँदैन। नानी केटाहरू पनि चाहिन्छ त चाहिन्छ, तर केटाहरूलाई चाहिँ कस्तो भने विशेष गणेश र कुमारको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ केटाहरूलाई पनि पूजामा राख्न सकिन्छ। कुमार गणेश, अब जस्तै कुनै पनि हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बीमा पूजा गर्नुभन्दा अगाडि गणेशको र कुमारको पूजा गर्ने चलन छ। त्यो अनुसारले गणेश र कुमार सम्झेर 2 बालकहरूलाई चाहिँ हामीले पूजा गर्न सक्छौँ। केटाहरू पनि बाबा त्यस्तै 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मका केटाहरू व्रतमन्द 8 वर्षमा गर्छन्। आजकल त बुढो भएर पनि गर्छन्, चलन छ हैन। तर व्रतमन्द 8 वर्षमा गरेका छन् भने चाहिँ 8-9 वर्षसम्मका बटुकलाई दिन सकिन्छ। त्योभन्दा अलि उमेर छिप्पेकालाई त नलिनु नै राम्रो भन्छ। वर्षक 5 देखि 6-7 वर्षसम्मका। ऐसा क्या, वो अगर हमें पीरियड हो गए तो हम वो अपने पूजा पाठ जिस तरीके से अच्छे से करते हैं ना, वो सब हम नहीं कर पाते हैं। फिर वही है, सिर्फ व्रत रखो और नॉर्मली जैसे रोज होता है वैसे ही होता है। फिर पूजा पाठ कुछ मतलब एक्साइट नहीं होते हैं, खुशी नहीं मिलती है उसमें फिर। अच्छा। एकदम यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बाबा परिवर्तन आउँछ पूजा आजामा। हामी हिन्दू धर्मावलम्बीलेमा चाहिँ पूजा आजा गर्नमा, अब जस्तै खानापिनामा छोइछाइ चाहिँ नगर्ने चाहिँ चलन छ बाबा। अब कस्तो भन्छौ भनेदेखि तिमी चाहिँ जस्तो हजुरको स्पेसिफिक के चाहिँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ? जस्तै अब दसैँको बेलामै अब मानिलिउँ मेरो छोरीहरू कोही बुहारीहरू चाहिँ पर सरे भनेदेखि उनीहरू अलग्गै बस्छन्, डेली नुहाइधुवाइ गर्ने, यस्तो पूजामा सरिक हुन पाएनन्। अब भोजनहरू प्रसादहरू बनाउन पाएनन्।
अनि अलग्गै खाने अलग्गै बस्ने 4 दिन भएपछि 4 दिनमा नुहाइ धुवाइ गरेर शुद्ध भएर अनि प्रसाद खान प्रसाद लाउन पाइयो। तर अझै पनि 5 दिन नभइकन भगवानको पूजा गर्न पाइँदैन। जस्तै पितृ कार्य श्राद्ध तिथिहरूमा चाहिँ 7 दिन नभई हाम्रो गर्ने चलन छैन। त्यस्तो हो बाबा। Yes, it's more or less, it's not as stringent as it used to be, but more or less the women who are menstruating, they refrain from entering the temple premises, even so much they don't even touch the puja thali, वो थालियाँ नहीं बिठाती हैं, वो कन्याओं को नहीं पूजती हैं, they don't worship the devi themselves. Some places they also refrain from fasting, so that's about it. महिनावारी भयो भने चाहिँ परिवारमा त्यो चाडबाडको बेलामा चाहिँ हैन अब भगवानको सामानहरू केही पनि छुनु हुँदैन, पूजा गर्नु हुँदैन, अलि टाढा बस्नु हुन्छ। अनि पकाउने ठाउँमा किचनमा पनि जानु हुँदैन। अरू सामानहरू यस्तै अब छुन हुने र नहुने हुन्छ। अब रुममा चाहिँ बेड रुममा चाहिँ जानुहुन्छ। त्यही हो। अब अरू कुरा त ऐसा हाँ नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। बस मैंने ये है कि नहा धो के हम लोग पूजा वगैरह कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें प्योरिटी ज़्यादा देखते हैं तो नहा के अच्छे से साफ कपड़े पहन के हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसे अलग चीज़ें क्यों करते हैं? ये तो मतलब हमारे बुजुर्ग हैं, मम्मियों ने ये सब बताया था, उसी तरीके से हम करते आ रहे हैं। अच्छा, तो ये सब आपको आपकी मम्मी ने सिखाया जी, या मम्मी बड़े ने- बुजुर्ग जी, जो आपके जी, आसपास बड़े थे? बुजुर्गों ने ये सब सिखाया। यस्ता परिवर्तनहरू गर्ने परम्परा कसले सिकायो? हामीलाई चाहिँ पहिला हजुरआमाहरूले अब बुढा पुस्ताहरूले पहिल्यैदेखि त्यही चलन थियो। उहाँहरूले पनि त्यही गरेर आउनुभयो, हामीले पनि त्यही अनुसरण गर्यौँ। These deviations occur because of the same thing, the idea of purity and pollution. There is the idea of prepubescent girls being pure and virginal before they have bled their first blood. After that they are kind of grown up. They are also societally they are also they become sexual objects, and that is, I think, in my opinion, is why these deviations occur. And for the thing that you asked, my family, I'll not say that they were stringent as always stringent, but I have a little sister and we both kind of resisted, so that's why they are not as stringent as they used to be. अनि यो चलन चाहिँ कसले सिकाएको नि हजुरहरूलाई? अब यो पुर्खाको बाउबाजेदेखि नै चलिआएको भयो नि त। यसमा चाहिँ यो परिवर्तन गर्ने परम्परा बाबा कस्तो हुन्छ भनेदेखि नि यो चाहिँ नानी अब कसले सिकायो के सिकायो भन्दाखेरि पनि यो यस्तै चलिआएको। अब आमाहरूले हाम्रा हजुरआमाहरूले आमाहरूलाई सिकाइस्यो, अब आमाहरूले हामीलाई सिकाइस्यो, अब हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई सिकाउँछौँ होइन। अब यो चाहिँ कुराहरू भनेको एउटा आफ्नो अब कल्चरै भनौँ न, यसलाई चाहिँ के भन्ने। अब अहिलेको आधुनिक जमानामा त अब प्राय कसैले मान्दैनन् पनि, तर म चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ मेरो सास र उन्जेलसम्म चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ म एकदम फलोअप गरि नै रहन्छु बा। मलाई यो It's not like someone sits you down and teaches you कि अच्छा ये नहीं करना है, but we usually see these things being transferred from your parents, mostly your mother, your grandmother. Fathers, they don't really talk about menstruation because it's taboo, but they also do participate in this kind of mentality that yes, menstruating girls should refrain from all these things. Okay. पीछे से ही चला आ रहा है, वही लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मुझको लगता है आजकल की लाइफ में हमको अपनी सोच को बदलना चाहिए। इसलिए मेरी 2 बेटियां हैं तो मैं उनको इतना ये सब नहीं करती हूँ, उनको मैंने फ्री छोड़ा हुआ है।
भन्नुभयो। किनभने हाम्रो धार्मिक शास्त्रको कुरा गर्दा हामी हिन्दू धर्मका हौँ। हाम्रो पौराणिक कालदेखि जुन हिन्दू संस्कृति हिन्दू धर्ममा चाहिँ आधारित जुन छ त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि यो छुवाछुत नछुने बार्ने महिनावारी हुँदाखेरि यसो गर्ने यसो नगर्ने भनेर भनेको छ। त्यो भएकोले गर्दा त्यही पौराणिक कालदेखि जुन चलिआइरहेको छ त्यही कुरामा हामी फलो कतिवटा कुराहरू चाहिँ अब भनौँ न पहिले ओछ्यान पलङमा सुत्नु हुँदैन थियो यस्तो गर्नु हुँदैन थियो भने त्यो चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ म मान्दिनँ। पलङमा सुत्छन् सबै थोक हुन्छन् तर सिर्फ भगवानको पूजापाठ हुँदैन, गर रसोई भान्साघरमा खानापिना बनाइँदैन, यति कुरा चाहिँ हामीले बार्ने गरेका छौँ बाबा। No, never. They just tell you that you're not supposed to do it. Absolutely. It's just like कि नहीं करना है तो नहीं करना है. They don't have explanations for it other than the ones we already know, but nothing else. बोलते थे कि उन्होंने भी अपने मम्मी से और उनकी मम्मी से पीछे ही ये लोग सब सीखते आ रहे हैं, वही उन्होंने हम आगे बताते हैं और यही कहते हैं कि इस टाइम पे जब लड़कियों को पीरियड्स होते हैं तो वो अशुद्ध हो जाती हैं। मुझको लगता है कि उस टाइम पे लोगों को इतना नहीं मालूम था कि ये क्यों होता है पीरियड्स, तो उनकी मेंटालिटी शायद इसी तरह की हो। Because साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा हुआ था और औरतों को वैसे भी थोड़ा इतना ओपनली नहीं रखा जाता था, इसलिए। मलाई यो परम्परा चाहिँ राम्रो लाग्दैन हैन। अहिलेको बच्चाहरूलाई चाहिँ यस्तो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर यो राम्रो लाग्दैन। तर नगर अब भगवानलाई छुनु नहुने र त्यो अब सामानहरू छुनु नहुने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ, तर चेन्ज गर्नुपर्छ यो। ठिक अरू सबै चेन्ज गर्न चाहिँ अब मन लागेको छ हैन। किचनमा जान यताउति गर्न अब हाम्रो केटा मान्छेहरूलाई नछुने भन्ने चलन छ, जनै लगाउने चलन छ, व्रतबन्ध गरेको मान्छेलाई छुनुहुन्न भन्ने छ। तर त्यो सबै चेन्ज गराएर अब हामी चाहिँ भगवानको मन्दिरमा जाने भगवानको सामान छुने चाहिँ त्यो मनले नै मान्दैन कि यो छुनुहुन्न भन्ने हाम्रो कन्सेप्टबाट त्यो हटाउन नै सक्दैन मान्ने। अब पुर्खाले चलाइआएको चलाउँदै जानुपर्छ र चलि नै रहोस् भन्ने छ यसमा। Absolutely not. मतलब शुरू में जब ऐसा हुआ था तो अजीब लगता था, लेकिन अब आदत पड़ गई है तो कुछ नहीं लगता कि पता है कि हाँ ये हमें काम नहीं करना है। अच्छा। जी सिखाना चाहती हूँ और मेरी बेटी है, मैं उस जैसा मैं करती हूँ वैसे ही उसको सिखाती हूँ। I think they're very unfair, and I also think that if I'm not personally a faithful person myself, but if other people have faith in a god or like some festivals, they come once a year, and a lot of people, their entire lives revolve around you have to save money to buy new clothes, buy utensils or other things that come with prosperity and festivity, and these things only come once a year, and no matter what you do, you can't time your period, can you? You just can't. So even if around festivities you do get your period and you are unable to do the things we usually do, these things, festivities do not just give you joy, they give you a sense of community. And once that community ostracizes you for something that is so scientific and so natural, without which the human civilization will not sustain, so I think it's hurtful for them that they are unable to participate in something so simple as worship. हामीले चाहिँ पुरानो पिढीहरूलाई एकदम कन्भिन्स गराउनुपर्छ कसरी भन्ने। अब यो महिनावारी हुने चाहिँ सबै शिक्षित भइसक्यो अहिलेको मान्छेहरू।
व्यक्तिहरू अब सबै शिक्षित भएर यो महिनावारी चाहिँ कसरी हुने हो, के हो, कारणले भएको हो, यो छुन नहुने भन्ने प्रथा चाहिँ अब पुरानो मात्रै हो। पुरानो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ, पुरानो विचारधारा भएको व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ कसरी भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढेका छौँ। यो हाम्रो शरीरमा चाहिँ विकार वस्तुहरू चाहिँ बाहिर निस्किने काम हो। त्यो ब्लिडिङ भयो भनेर छुन नहुने चाहिँ होइन, त्यो विकार वस्तुहरू बाहिर निस्किने हो हाम्रो शरीरमा भएको। त्यो कुराहरू चाहिँ बुढापाकाहरूलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ हामीले सबैजनाले। Right, because I think it comes from a place of resistance only. I think our entire existence has become such a movement that yes, we have to resist each and everything that goes against our humanity. Even when I just said that, my sister and I, we resisted a lot of such practices ki achar ki barni haath nahi lagani hai and everything. So all these things, they do not just come from a place ki acha nahi, what, this is unfair. It comes from a place of education. I have personally done things that I don't believe in those things anymore, but I have practices all these things, like not entering the temple premises or not fasting during periods or anything. But once I learned that this is something that you cannot control, or this is something that you cannot delay in any way or form. These things only came after I understood. I was educated about it. Once I educated myself about all these things, only then I have started resisting about it. So I think it should be a part of a curriculum, not just in school, but also I think people should conversate about it openly, and yeah, just that. Having an open conversation about things is the only way to remove taboo, because these things, like I remember from personal experience that how we used to keep our sanitary napkins hidden in one dingy corner of our closet so that no one knows कि अच्छा हाँ भी periods होते हैं and stuff like that. But once you start have a conversation about things, people understand why certain physical and bodily processes happen in the first place, and I think that's the way to go ahead. आप कैसे चाह सकते तो मैं उनको अवेयर करना चाहिए कि अपने डॉटर्स को ये सब सिखाएं कि कोई ऐसी अशुद्ध चीज़ नहीं है ये तो नॉर्मली एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो हर लड़की लेडी को अपने लाइफ में जाना पड़ता है। तो इसमें कोई अशुद्ध नहीं होती है वो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको समझाना पड़ेगा, हमें ओपनली समझाना पड़ेगा। पहले होता था कि नहीं, जब पीरियड्स होते हैं तो घर में किसी को पता नहीं चलता था, पता नहीं चलना चाहिए कि हाँ मेरी बेटी को पीरियड्स हो रहे हैं, या उसके फादर को पता नहीं चलना चाहिए, उसके भाई को पता नहीं चलना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि आदमियों को भी, जेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, उनको भी ये सब चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये कोई इम्प्योरिटी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके जो उसका भाई है वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ कैसे ट्रीट करेगा, वो भी फिर सेम ट्रीटमेंट देगा। लेकिन उसमें भी चेंज आएगा अगर हम अपने घर में जो हमारे जेंट्स हैं उन लोगों को इस बारे में बताएंगे, तो उनका भी माइंड थोड़ा खुलेगा और वो इस चीज़ में अपनी डॉटर्स को, अपनी बहू और वाइफ का सपोर्ट करेंगे। Thank you. Dignified menstruation at its heart deals with a state of freedom from any forms of abuse, discrimination, and violence associated during menstruation itself. Dignified menstruation is a human right concern as aligned with the principles of Human Rights Declaration in 1948. Still, the practice of dignified menstruation is very uncommon in our society as it has its roots dug very deep in the cultural, religious, and societal norms. We are born and then do we only have choices. Before that, it's a matter of chance. A chance that instills within you the nurture and elegance of being a woman.
But even after birth, the choice of freedom of woman's own body isn't even her own sometimes. हरेक साल चाडपर्व नजिकै आउँदा हामी महिलाहरू यसपालि त टीका लाउन पाउने हो कि नपाउने हो भनेर चिन्तित भएको भेटिन्छ। हामीले त सानैबाट महिनावारी भनेको महिलाको एउटा प्राकृतिक स्वरूप हो भनेर सुन्दै हुर्किँदै आएका छौँ। त्यही पनि महिनावारी भएका बेलामा चाडपर्वमा महिलाहरू किन पन्छेर बस्नुपर्ने? We've been following our traditions blindly for so long that we've silenced all the voices questioning us. But not anymore. This Dasai, let's celebrate the normal normally. Let's bring the change in us by including ourselves in the blessings regardless of our periods. Hamro mahinavari hamro garima ho. Let's all unite together in bringing dignity to menstruation.